Today I'm at Galgotias University and looking at the campus and the facilities. It's a privilege for students which we never used to have, right? So the question is not that कि today मैं pass out करके experience लेके फिर मैं start करूँ. I think that is one approach, of course. जैसे let's suppose I am a student at Galgotias, मैं कुछ tech related startup कर रहा हूँ और मैं आपको pitch करता हूँ versus आपके पास एक IIT दिल्ली का topper आता है, वो कुछ AI based startup कर रहा है, वो आपको pitch कर रहा है. दोनों pitches को आप कैसे judge करोगे? No, so we've done that. As I said, in previous fund, we've invested in 180 companies and we've invested in a lot of tier 2 companies, tier 2 college founders, sorry, and tier 1 as well. One of the evaluation criteria is pedigree, but not the only thing. अगर आप में एक skill set है, right, जो IIT वाले में नहीं है, जो मैंने बहुत बार देखा है, we've gone ahead and invested in, you know. Hi everyone, this is Arav Gupta and I'm very excited to announce that आज हमारे साथ है शशांक सर, who is a well-known venture capitalist and a founder of 24/7 VC. Sir, how is you doing? Good. Thanks for having me. सर जब मैंने आपका पॉडकास्ट लिया था यू वर अमंग द फर्स्ट VCs जो मैंने सेशन चालू करा थे पॉडकास्ट लाइक अराउंड 3 to 4 years बैक एंड आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट अभी तक इट्स बीन 100 to 200 VCs एंड फाउंडर्स मेड टू फोर्ब्स उन सबका सेशन मैं ले चुका हूँ. तो वेरी फनी थिंग टू किक स्टार्ट सर, आपको मेरी बात मतलब याद था कि लाइक लास्ट 3 साल पहले हमने ये सेशन करा था, तो क्या VCs इन्वेस्टर्स की मेमोरी इतनी शार्प रहती है? Yeah, I don't know. I mean, I think your session was so memorable that I remembered. सर एक मिथ रहता है कि मतलब सबका फर्स्ट स्टार्टअप फेल होता है, फर्स्ट आइडिया ब्लंट रहता है, आपकी क्या POVs है उसके ऊपर? यार मेरा वैसा थिंकिंग नहीं है because my first startup was a success. I built it out, sold it. My first investment was a success. So it's actually a myth कि आपका first fail होता है. I think what लोग जो कहना चाह रहे हैं उसमें is message is that go ahead and give it your best shot. अगर fail हो तो कोई there's no problem in that. You can try again. Exactly. Is the message I think is it. But if you're giving it a best shot, your first try can be a super hit. Exactly सर, हम ये सेशन ना स्टूडेंट सेंट्रिक रखना चाहते हैं, तो बहुत सारे जेनरिक क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि भैया मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ और मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, थोड़े से फंड्स आ जाएंगे, थोड़ा सा रिस्क कैपिटल होगी, फिर मैं बिजनेस चालू करूंगा, माइंडसेट ऑफ अ स्टूडेंट. बट फॉर मी दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. आई एम अ काइंड ऑफ ए पर्सन जिसको अर्जेंसी रहती है चीजें स्टार्ट करने में. आपका पर्सपेक्टिव इस स्टेटमेंट को लेकर क्या है? As in sense of urgency. सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं कि मतलब एक लाइक ऑफ कोर्स राइट टाइम तो कोई होता नहीं बिजनेस स्टार्ट करने का, बट क्या आप हमें एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन और थोड़े से रिस्क फंड्स चाहिए रहते हैं कुछ बिजनेस चालू करने के लिए? So I think that's the wrong question to ask because what students these days are not realizing, and I keep saying this, in our generation, we didn't have access to great campuses. I mean, today I'm at Galgotias University and looking at the campus and the facilities. It's a privilege for students which we never used to have, right? So the question is not that कि today मैं pass out करके experience लेके फिर मैं start करूँ. I think that is one approach, of course. You should get internship. But today आपके कॉलेज वाले आपको इतना समय दे रहे हैं कि आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं. राइट. So you should do that. By the time you've completed your graduation, you have some experience in working in some other organizations. B, you have access to the incubation centers and e-cells and the labs, so you can build and fail and attempt and all that. And by the time you go, you're graduated, you're ready to do business. Now the reason it is so important to do businesses in India because India का interesting vantage point है अभी. 2025 में हमारी इकोनॉमी अगले 10 साल तक is at a golden phase. जितने लोग entrepreneurs आएंगे, जितने businesses, जितने SMEs business कर पाएंगे, जितने startups घुस पाएंगे, उतना ही इकोनॉमी बढ़ेगी जैसे सिलिकॉन वैली में हुआ था. Right. Silicon Valley में lot of people start right outside after engineering. Stanford, Howard is in Boston. You know, all these companies, all these founders set up. So the culture is there. If you go to Silicon Valley, वहाँ पे advertisement boards के ऊपर you don't have movie posters. You have company की AI ads. Right. So point I'm trying to make is that message to the students is if you want to do a company, do it. Or if you want to do a job, do it. Don't be in between. I'll try something and I'll do that. Okay. Don't do that because entrepreneurship means giving in a full base. So आप opportunity ढूंढिए,
वो ये भी हो सकती है कि मेरे को फूल सप्लाई करना है गंगा घाट पे, जिसका एक यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पे एक गंगा बह रही है, उस चौक पे मुझे फूल सप्लाई करना है। सिंपलिस्टिक एग्जांपल है, राइट। सो यू कांट से कि मैं ट्राई करता हूँ फिर मैं देखूंगा कि मैं फूल वहाँ करूंगा नहीं। यू से आई वांट टू डू इट, आई विल डू द बिजनेस फॉर अ ईयर एंड हाफ, बिल्ड इट, and then I see if I can open it in Banaras also. Okay. Right? Multiple. That rigor has to be there. Right? You can't say if and what, right? And if you have that rigor, then India का timing बहुत अच्छा है कि आप कुछ भी बनाओ तो golden period है इस तरह से, right? सर आप डेली बेसिस पे बहुत सारे पिचेस जज करते होंगे। आई वांट टू आस्क यू कि जो पेडिग्री फाउंडर्स जब आपको पिच करते हैं तो आप उनको पीओवी को कैसे देखते हो? जैसे लेट्स सपोज आई एम अ स्टूडेंट एट गलगोटियास, मैं कुछ टेक रिलेटेड स्टार्टअप कर रहा हूँ और मैं आपको पिच करता हूँ, वर्सेस आपके पास एक आईआईटी दिल्ली का टॉपर आता है, वो कुछ एआई बेस्ड स्टार्टअप कर रहा है, वो आपको पिच कर रहा है, दोनों पिचेस को आप कैसे जज करोगे? No, so we've done that. As I said, in previous fund, we've invested in 180 companies, and we've invested in a lot of tier 2 companies, tier 2 college founders, sorry, and tier 1 as well. We don't. One of the evaluation criteria is pedigree, but not the only thing. अगर आप में एक skill set है, right, जो IIT वाले में नहीं है, जो मैंने बहुत बार देखा है, we've gone ahead and invested in, you know, those kind of founders, and that has comprised of. There are many such founders who have done extremely well. One case in point, Data Sutram. They come from Jadavpur University, right? They built out a company in location intelligence, company called Data Sutram, and it's a Series B company. Getting you right. Jadavpur is not an IIT, right? And like this, we've invested in a bunch of other folks, right? There's Kerala Banana Chips, if you've heard. He's from SIBM, Symbiosis, right? Not IIT, right? So I don't think so. It's the pedigree of the education. I think it's the education as well as the zeal of the individual, and that can happen from anywhere. It doesn't need you to be IIT. Yeah, we believe that next will be from Galgotia. No, it will be. I've seen the facility, and I'm truly amazed by the student access which you have to laboratories, and that is also to the extent of biotech. I've never seen that in any college, and that essentially gives you, because इंडिया में हेल्थ केयर बायोटेक अगर आप फॉर्मुलेशन बना सकते हो और कॉलेज लेवल पे अगर आप पेटेंट आ सकता है और वहाँ से वो एक्वायर हो सकता है, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. सो नो अदर इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग दिस. सर आस्किंग यू अ वेरी रॉ क्वेश्चन, क्या मैं किसी कोर्स को पढ़कर या बुक को पढ़कर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ? Yes and no. I think it's a mix of theory and practice. You can only understand the power of selling till the time you go out, try and sell something and get rejected. That you can learn about it in a book, but you will not feel the experience. But that being said, you have to read. There are models of building a business. How to build a strategy. Marketing strategy कैसे होती है? फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे होती है, बिजनेस मॉडलिंग कैसे होती है, एक मुकाम तक पहुंच के प्राइसिंग मॉडल कैसा होता है, राइट? और कॉम्पिटिटर्स को कैसे मैच करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे मैच करते हैं, रिटेलर्स को कैसे, ये मॉडल्स पढ़ने पड़ते हैं. जिसकी समझ अगर हो तो आपको आसानी पड़ेगी एग्जीक्यूशन में. बट इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो. Experience you will get till the time you execute. Okay. So every time, so nobody started with experience, right? So you do these things, practical and theory together, and you'll gain experience, right? So as I keep telling founders, right? So a wise man is who learns from his mistakes. A wiser man learns from others' mistakes. Yeah, right. Right. Getting you. So या तो तुम अपनी मिस्टेक करो, 10 साल मिस्टेक करके सीखो, या दूसरों की गलतियों से भी सीखो. And that is what the ecosystem is right now, where you have many founders who built up great businesses. So now no longer you are in a situation where you are saying यार मेरे को अभी तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा. You can learn it theoretically, you can implement your model, quickly go out, execute, and come back and learn from those mistakes in a shorter time. Yep. So it's always a combination. And to answer your question directly, in terms of the book, I think one book which I would recommend is Lean Startup. That methodology, I think every student should read. It gives you a mindset of how you have to be lean, and you can build highly competitive teams.
but also means that कि lean team के अंदर क्या होता है कि you have to do a lot of heavy lifting yourself. So you should be a multitasker also. Okay. And also should know how to delegate enough. Okay. So Lean Startup is a book which I think you should. सर मेरे को ना पॉइंट I think it's called Lean Startup, if I'm not mistaken. It is Lean ओके Startup. श्योर सर मुझे ना पॉइंटर्स में आंसर चाहिए इस क्वेश्चन के आई एम स्टडिंग एट गलगोटियास मुझे कोई कंपनी चालू करनी है कैसे मैं अपनी इंडस्ट्री फाइंड आउट करूँ मेरे पास कितना कैपिटल होना चाहिए और क्या क्या स्किल सेट्स जनरल वाली मेरे को रिक्वायर्ड है So first of all, if you're wanting to set up a company, you should research on what excites you, right? So doing a industry research कि opportunities कहाँ हैं? यप अभी आप नॉर्थ में हो नॉर्थ के अंदर अगर कोई कैब सिस्टम इज मिसिंग लेट्स से नॉर्थ ईस्ट एरिया देयर इज नो कैब सर्विस राइट मेघालय साइड right so you do a research on what are the problems and do you have a solution which is big enough. Is there a pain problem which is you can address? And that can be achieved by you doing just a national research, right? Getting it. Once you've done that, then you figure out who are the other players in the market. And it's called a blue ocean and red ocean strategy. Blue ocean is जहाँ पे opportunity है. Red ocean is a competitive market, right? ठीक है And then if you're finding yourself on the blue ocean side, then you figure out is there a way I can build a product, right? एंड उस प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट कितना आएगा टेक कितना है नॉन टेक कितना है एंड दैट्स हाउ यू कैन स्केल बट इट ऑल बिगिंस विद रिसर्च एंड स्टडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ फीलिंग अ प्रॉब्लम योरसेल्फ एंड देन फिगरिंग आउट इज इट अ बिग इनफ मार्केट राइट सर लेट्स जस्ट टेक द लास्ट सेगमेंट ऑफ कमिंग आउट टू द फर्स्ट टाइम फाउंडर्स कि क्या क्या वो गलतियां करते हैं वेरी जनरिकली आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दे डू इज they don't understand how to sell to B2B. Okay. So they assume कि sales cycle छोटा होगा लेकिन वो बड़ा होता है that affects their cash flow. The other thing is sometimes they're not full-heartedly into it. They think part time में चल जाएगा तो ही मैं करूँगा तो उससे कभी वो momentum pick up नहीं होता है. Sir, can I just take a pause? Like कि part time क्यों नहीं? Let's suppose मैं job कर रहा हूँ मेरे को एक idea पे conviction आया है ना instead of leaving that job शायद मैं एक product market fit search करूँगा part time basis पे जब मेरे को मिल जाएगी of course that's what I'm trying to say. So sometimes some driven founders are able to do that. Some founders are not able to because they're like जब तक ये सक्सीड नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं सो दे आर नाइदर देयर नॉट देयर सम ऑफ द गाइज आर एबल टू डू इट बिकॉज दे आर वेरी फोकस्ड दैट ये बिकने लगेगा तो मैं कर लूंगा सो आई थिंक दोस आर सम ऑफ द मिस्टेक्स which and the last mistake is that founders think that I'll set up a business thinking that I'll be able to earn money. You're not here to earn money, raise money to earn money. Salary है तो फिर आपको corporate में जाना पड़ेगा. So start a business knowing that for the first 2 years you will not be drawing salary because you have to hire a team and build a product. Exactly. So ये कुछ हैं many such other mistakes to do, but I think we've come a long way and founders have really improved. My last question is as an investor आप गलगोटियास के साथ collaborate कर रहे हो and बहुत सारे students यहाँ पे startup कर रहे हैं आपकी इस collaboration से क्या benefits मिल सकते हैं? Yeah, I mean I think what we intend to bring onto the table is we've done I've had a personal experience of investing in 200 companies over the last 10 years and we've seen companies across consumer, deep tech, industrial, enterprise tech. So the idea is to build, share our learnings in terms of practical inputs of how businesses should be built and better outcomes if you're starting a company. So chances of your survival has to be high. And I think, I'm looking forward to sharing my insights with the students. These are the things which have worked in the industry and these are the things how investors look at, how investors evaluate businesses. And I'm looking forward to the discussion. Thank you so much, sir. It was great hosting you. Take care. Thank you for having me.